Hello guys, welcome to Ashutosh Coaching Center. Now today we are going to starting the chapter name is mechanical properties of fluid. Okay, तो जानते हैं fluid क्या होता है. Fluid are those substances which can flow and with when an external force is applied on it. The liquid and the gases are fluid and the fluid do not have finite shape but takes shape of the containing vessel. The normal force exerted by the liquid at rest on a given surface is called the thrust ऑफ लिक्विड. ओके, और उसके बाद कहा जाए ऐसा यूनिट ऑफ द थ्रस्ट इज न्यूटन. ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है. जबकि ओके इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन का क्या है. नॉर्मली जिस पर फोर्स लगता है, फोर्स तो फोर्स ही होता है ना, चाहे कोई भी फोर्स हो, तो फोर्स का न्यूटन ही होगा, जाहिर सी बात है. इफ़ द सॉरी इसका वॉल्यूम फुल कर लो. देखो, इफ मैकेनिक्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वुड बी कंसिडर्ड. फर्स्ट, when the fluid is at the rest, hydrostatic, and when the fluid is the motion, hydrodynamic. Okay, pressure of a liquid, it is defined as the normal force F exerted by a liquid at the rest per unit area of a surface, and it is also known as hydrostatic pressure, and it is denoted by the P, and P is equal to फोर्स बाय एरिया. मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है. कंसीडर अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेन एज अ सोन इन फिगर. लेट ए यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ बॉटम ऑफ container. H is equal to height of liquid in the container. V is equal to volume of the liquid in the container. Ah is equal to P is equal to density of the liquid, and M is equal to mass of liquid, and is equal to mg, P, and the AHG. Normal force exerted by the liquid at the bottom of the container. F is equal to W is equal to P is equal to AHG. Therefore, the force exerted by the liquid and F is equal to force by area and AHG by A, and P is equal to PGH. Okay, उसके आता है रिलेटिव डेंसिटी और द स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्या होता है? It is the ratio of the density of substance to the density of a given reference material. Specific gravity usually means relative density, and with respect to water, the term relativity is often referred to in the scientific use, and it is defined as the ratio of the density of particular substance with that of water, and relative density of a liquid density of a लिक्विड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर. मतलब किसी चीज़ का रिलेटिव ऑफ डेंसिटी निकालनी है, मतलब लिक्विड का अगर तुमको निकालना हो रिलेटिव डेंसिटी, तो फॉर्मूला है लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर. इसको पूरा दोनों को डिवाइड करके तुम उसका रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो उस लिक्विड का. ओके, अब देखा जाए तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है. द कंसीडर थ्री वेसल ए एंड बी एंड सी आर फिल्ड विद अ लिक्विड टू द सेम हाइट एज सोन इन फिगर. तो ये नेट काम नहीं कर रहा है, बट आप ऐसे इमेज कर लीजिए. पॉइंट्स क्या कह रहा है. देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ स्मॉल पिस्टन एंड द सिलेंडर एट द बॉटम ऑफ ईच कंटेनर, एंड डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर इज द सेम ऑल्दो द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन थ्री डिफरेंट वेसल इन डिफरेंट, एंड द pressure meter of every position cylinder shows the same reading. The liquid pressure at a point is independent of the quantity of living and independent only on the depth of the point and below the liquid surface, and this is known as the hydrostatic paradox. Okay, इसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कहते हैं. तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, इसको आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद हमारा ये गॉज प्रेशर क्या होता है. इट is the pressure exerted by the liquid by an instrument. P gauge is equal to PGH. And Pascal law क्या होता है. Pascal law, it states that if the gravity is effect neglected and the pressure exerted by every point inside the liquid is same, the working of hydraulic lift and the hydraulic pressure and the hydraulic brakes are based on the Pascal law. Okay, जितने भी जो सब ये ध्यान रखना, ये सब किस पे होते हैं, पास्कल लॉ पे बेस्ड होते हैं जितने भी हाइड्रोलिक मशीन होते हैं. ठीक है, उसका देखा प्रूफ का कंसीडर 2.21 and 2 सेकेंड इन 1 and 2 इनसाइड द लिक्विड एज शोन इन फिगर. लेट H is equal to vertical distance between the point P and P2. P is equal to density. P1 is equal to pressure of 0.1. P2 is equal to pressure of 0.2. Consider a liquid cylindrical of the high H and the areas of the cross section A as shown in the figure, and difference force acting on the cylindrical are. First, force on the top face F1 is equal to P1A vertically downward, F force on the bottom face F2 P2A and vertically down upwards. Weight देखो, थर्ड वेट ऑफ सिलेंडर W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू PVG इज इक्वल टू AHGH एंड वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, इसको भी ध्यान रखना. एंड सिंस साइड तो भाई, and since the cylinder is equilibrium, F1 plus W is equal to F2 PIA plus PAHG is equal to P2A, and P2 plus
P1 is equal to pgh, and if the gravity is neglected then g is equal to 0, and finally P2 is equal to P1, the hence the partial pressure of point P1 and P2 is the same. अब क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 3 तो 5, हाँ 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे लगभग इसका क्या होता है, ये मतलब कि इसका पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, वो क्या होता है 1 लाख न्यूटन पर न्यूटन, जो कि बहुत आते हैं वापस, वो फ़ोन गलती स्विच ऑफ हो गया था। अब आगे कह रहा है इट इज़ इक्वेलेंट टू वेट ऑफ 10 टन ऑन द 1 मीटर स्क्वायर एट अ सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, एंड देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू HDG, यानी कि बोलते हैं ना, इज इक्वल टू 76 इंटू 13.6 इंटू 989 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे H जो है वो कांस्टेंट है, D जो है डेंसिटी है, और D जो है वापस उसका वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब आगे जानते हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट क्रॉस आवर बॉडी बिकॉज द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू our circulation system balance this pressure, and the atmospheric pressure is also measured in the torr and the bar. Okay, and 1 torr is equal to होता है हमारा, what is happening here, जहाँ पे 1 टॉड इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच मर्क्यूरी HG कॉलम होता है, और एक बार का वैल्यू होता है 10⁵ पास्कल। द एनारॉइड बैरोमीटर इज यूज टू द मेजर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर PABS, द P इट इज द सम ऑफ गॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर PABS इज इक्वल टू ATMS प्लस P गॉज बुयंस होता है। इट इज व्हेन अ बॉडी इज पार्टिकुलरली or a fully immersed in a fluid, upward act on it which are called buoyant force or the simply buoyancy. The buoyant force act on a certain of gravity of the liquid displaced by the immersed part of the body, and this point is called the central buoyancy. Archimedes principle क्या होता है? When a body is partially or fully immersed in a liquid, it loses the sum of the weight, and it is equal to the weight of liquid displaced by the immersed part of the body. If T is the observed weight of a body of density phi when it is fully immersed in a liquid of density phi, and then the real weight of the body W is equal to T by 1 minus phi by मतलब phi by sigma. अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अ बॉडी विल फ्लोट इन द liquid, the weight of the body is equal to the weight of the center weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. If W is the weight of the body and W is the buoyant force, then the capital W is smaller than small w, and then the body will sink to the bottom of the liquid. And when the capital W is less small than smaller w, then the सॉरी यहाँ पे था जो कैपिटल W है वो बड़ा होगा स्मॉल w से। ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल W छोटा होगा स्मॉल w से, जिस कारण से बॉडी विल बी फ्लोट पार्शियली एंड सबमर्ज इन लिक्विड। ओके, एंड जब when capital W and small w is equal, then the body is float in liquid, and if whole volume is just immersed in liquid, the floating body will be stable equilibrium, and if meta center, the center of the buoyancy lies vertically above the center of gravity of the body, the floating body will be unable equilibrium if meta center and the center of the buoyancy and lies in the vertically below the center of gravity of the body, the floating body will be in the natural equilibrium, and if say meta center, the center of the buoyancy and the coincide and with the center of the gravity of the body. अब अगला डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? डेंसिटी है क्या? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इज ऑल्सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और द 10⁻³ kg पर ग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, वाटर का डेंसिटी है, इसको याद रखना। यहाँ तक और कोई दिक्कत? अब फिर इसे होने वाला था बट बच गया। अब देखो, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डायमेंशन formula is ml-3, and the relative density of a substance is defined as the ratio of density and density of the density of water at 4 degrees Celsius, and relative density is equal to density of substance by density of water is equal to 4 degrees Celsius, and the weight of is equal to the weight
weight of the substance in air and loss of weight in air, and the relative density is also known as specific gravity, has no unit, no dimension. For a solid body, density body is equal to density of substance, while for a solid hollow body, density of body is lesser than that of the substance. When immiscible liquid of the different densities are poured in a container, liquid of highest density will be at the bottom, while and that of the lowest density at the top, and interface will be plane. Density of a mixture of a substance: when two liquid of mass m1 and m2 having density p1 and p2 are mixed together, then density of mixture is p is equal to m1 plus m2 by p m1 p1, ठीक है। यहाँ पे क्या एम टू प्लस पी टू, एंड इज इक्वल टू पी वन पी टू अंडर ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू बाय में एम वन पी टू प्लस एम टू पी वन। when two liquids are same same mass but the different density p1 and p2 mixed together, and then the density is mixture is equal to p is equal to 2p1 and 2p2, 2p1 and p2 by p1 plus p2, okay। when two liquid of the same volume b but the different density p1 and p2 are mixed together, then the mixture of then the density of mixture is p is equal to p1 plus p2 by 2। density of a liquid varies with the pressure, and the p is equal to p naught by p naught into 1 plus delta p by k, when po yani initial potential of the liquid, and k is the bulk modulus of elasticity of the liquid, and डेल्टा बी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? इट इज़ यूज टू द इट लिफ्ट अ हैवी बॉडी, एंड its working is based on the Pascal law, and the two cylindrical, one with the large and another with the small diameter, and it is used to the connected through a pipe, and each cylinder is lifted with a position and the load to be lifted, and it put on the piston of the larger diameter, and the force is applied on the piston smaller diameter. Let F is equal to force applied on the smaller position, F is equal to force exerted by the liquid on the large piston. A is equal to area of cross section of small area, capital A is equal to area of cross section of large area, okay, and the pressure exerted by the on the fluid by the smaller position. P is equal to F by A, and the pressure exerted by the liquid on the large position, P is equal to capital F by capital A, and hence heavy load can be lifted in by the application of a small force. अब हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली इन द मूविंग व्हीकल्स, देयर इज a very chance of vehicles is escaped because the wheels are not regarding and uniformly in the two avoids and the danger of the skipping, and when the brakes are applied, and the brake mechanism must be that each wheel is equally and simultaneously retired, and the hydraulic brakes and serves this purpose. It works on the principle of Pascal law, and the figure shows the schematic diagrams of a hydraulic brake system. The brake system has a main cylinder and filled with a brake oil, okay. The main cylinder of provided with a piston p is which is connected to the brake pedal and through a lever assembly. A T-shaped tube is the provided at the end of the main cylinder, and wheel cylinder having two piston p1 and p2 is connected to the T tube, and the piston p1 and p2 are connected to the brakes shoes S1 and S2 respectively. अब होता है हमारा अगला है हमारा, एक मिनट गलती से रोटेट हो गया। अगला है हमारा पीजोमीटर। क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू द प्रेशर ऑफ इट इज़ यूज टू द मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द पाइप। ये पीजोमीटर क्या होता है? वो किसी लिक्विड का प्रेशर नापता है, ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ पी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। एच क्या है? हाइट ऑफ पीजोमीटर ट्यूब, एंड द हेंस प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द पाइप पी इज इक्वल टू 5 mgh, ओके, 5 gh। या फिर Q2 मीटर क्या होता है? It is also used to measure the pressure of liquid in a pipe, and it consists of glass tube bent U-shaped and as in figure,
Okay, the U-tube contain a heavy load and generally let the P is equal to pressure of liquid in the pipe, H1 is equal to height of liquid above the datum line X and X, H2 is equal to height of heavy liquid above the datum line X and X, P1 is equal to density of the light liquid, P2 is equal to density of heavy liquid, and pressure is in the lift. Okay, जहाँ पे हमारा P+P1GH1 है और प्रेशर इन द राइट लिम्ब अबव द डेटम लाइन P2GH2, equating the pressure of two limbs is equal to P+P1 phi G1 GH1 is equal to phi 2 GH2. फाइनल रिजल्ट जो था P is equal to phi 2 G2H2 and P1 GH1. सरफेस टेंशन क्या होता है? It is the property of a liquid by the virtue of which the free surface of the liquid tends have minimum area. It is defined as the force acting per unit length of a line and drawn on the surface of the liquid and by the it is and denoted by the S. Okay, और इसमें कुछ भी नहीं है. अगला इसमें है वर्क डन क्या होता है. Work done in increasing the surface area of a liquid or a surface energy. The consider a frame ABCD with a movable arm PQ and let there a film of soap and solution between PQCB. Force due to the surface tension on the outer surface on the film is equal to F1 is equal to SI, and force due to surface tension on the inner surface of film is equal to F2 SI, and force required to the move arm PQ through a small displacement delta x is equal to F1, F is equal to F1 plus F2 यानी is equal to SI plus SI is equal to SI. The work done is in increasing the surface of area of the film is equal to F, W is equal to F del x. यानी कि फाइनल देखा जाए तो F is equal to हमारा था F 2SI यानी कि 2SI को यहाँ डाल के F2SI del x हो गया. फाइनल रिजल्ट हमारा आया था इज इक्वल टू S2 अंडर आई इंटू एल डी एक्स, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू डॉट एस इंटू डेल ए, एंड वेयर डेल ए जो है टोटल इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म है, एंड फाइनल आंसर हमारा है 2 ब्रैकेट में एल डेल एल इंटू डेल एक्स. अब आता है हमारा एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड. When the free surface of the liquid is curved and there is a difference of a pressure between the liquid side and the vapor side of the surface, and each liquid molecules on the surface of the liquid is attached by the force of the cohesion and in all direction, and the force of surface tension act tangentially and to the liquid surface. If the liquid surface is a plane and the molecules O on the liquid and surface will be equally attached on all sides, and thus no resultant force act on the molecules O, and hence the pressure on the both side of the surface is same. If the liquid is convex and there is a resultant or downward force R on the molecules O or for the surface to the remain equilibrium, and the pressure on the vapor side and 5 जो में दे रखा है liquid surface is concave and there is a resultant upward force R on the molecules O. For the surface to remain in the equilibrium, the pressure on vapor and side must be greater than the pressure on the liquid side. Thus, whenever a liquid surface is curved and the pressure on its concave side is greater than the pressure of the convex side. अब हमारा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप क्या होता है. एज वी नो डैट द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट द नॉर्मल टू द फोर्स टू द सरफेस इन द इनवर्ड डायरेक्शन ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप this must exist excess pressure inside it. Let R be the radius of a drop and dr be in the increase in its radius by the small amount due to the excess pressure. The work done by the excess pressure is equal to force into displacement P A dr, यानी P A 4 फिर P into 4 pi r square into dr. Okay, first equation increase in the area of drop 4 pi ब्रैकेट में R कैपिटल R plus dr का होल स्क्वायर.
4 pi capital R का स्क्वायर प्लस 2 R कैपिटल R डी आर प्लस डी कैपिटल आर का स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर 2 डी आर। फाइनल आंसर आएगा 8 पाई डी आर यानी कि इक्वेशन सेकेंड। अब डी आर टू कैन बी नेग्लेक्टेड बीइंग स्मॉल and increase in the surface of energy of the top and increase in the area into surface tension and finally answer 8 pi r d r into t yani equation first and second represent the same quantity, hence the p into 4 pi r2 and the dr and is equal to 8 pi r dr t in final answer p is equal to 2 pi r 2 t r यानी कि pin out is equal to 2 t by r. ओके अब देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल क्या होता है और सोप क्या होता है। सिंस अ बबल हैज़ फ्री सरफेस सो थ्री एक्सिड प्रेशर इज गिवन बाय द बाय P is equal to 2 into 2T by R is equal to 4T by R. Pin out 2T by R. Cohesive force क्या होता है? Cohesive force is the intermolecular force of attraction among the molecules of the same substance. That is why a water droplets attain in its spherical shape resisting the sphere separation. Adhesive force क्या होता है? Adhesive force are the attractive force between the unlike molecules and they are caused by the force acting between the two substances such as molecules such as mechanical forces sticking together and electrostatic force attracting due to the opposing charge, and it is due to the force of adhesion and that ink sticks to the paper while the writing. Shape of liquid meniscus in a narrow tube. Whenever there is a contact between the solid and the liquid, following case may arise, and if the adhesive force acting between the molecules of the solid and liquid is greater than the cohesive force between the acting between the molecules of liquid, and the shape of liquid is meniscus is concave, and the adhesive force acting between the molecules of the solid and liquid is less than the cohesive force and acting between the molecules of liquid, and the shape of liquid is meniscus and is convex, and the adhesive force acting between the molecules of solid and liquid and equal to the cohesive force acting between the molecules of liquid, and the shape of the liquid meniscus is convex. Okay, अब हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? इट इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड surface of the point of the contact and the solid surface inside the liquid and denoted by phi. Those liquid which wet and wall of the solid body and have angle of contact is less than the 90 degree, and the those liquid which do not wet the liquid of wall of the solid body and have angle of the contact less than theta मतलब greater than theta. ओके कैपिलरी ट्यूब देखा जाए तो कैपिलरी ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जो कि फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर्ड थ्रू आउट द लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. द कैपिलरिटी क्या होता है? व्हेन एंड ऑफ द ग्लास कैपिलरी ट्यूब ओपन एट द एंड एंड इज डिप्ड इन अ लिक्विड एंड विच वेट द ट्यूब एंड इन द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब rises to certain height above the liquid level in the container, and when the tube is dipped in a liquid which does not wet tube and the liquid level in the tube falls below the liquid in the container, the phenomena of rises of fall or liquid in the capillary tube is called capillarity. Okay, अब ये हमारा है राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब एसेंट फार्मूला क्या है. ओके तो आई थिंक आपको ये सब नोट कर लेना चाहिए, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे का देख लेते हैं. हालांकि फिर भी आप चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ, बट इसमें कोई मतलब नहीं बनता है. फिर विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ रिफर्ड टू एज द थिकनेस और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय द वर्च्यू एंड विच offers to assistant to the movement of one pair of a fluid over another adjacent layer. Coefficient of viscosity. The viscosity is calculated in the term of coefficient of the viscosity, and it is the constant for the liquid and depend on the liquid nature, and the Poiseuille methods is formally used to the estimate, and the coefficient of viscosity is in which the liquid flows through a tube and at different level of the pressure.
coefficient of viscosity of fluid will be the decrease as the temperature increases, while the inverse in the case of gases, and the coefficient of viscosity of gases will be increases and with the increase in the temperature. The increases in the temperature of the for the fluid dilate and the bond between the molecules. These bonds are directly associated with the viscosity, and the finally coefficient is decreased. Coefficient with the viscosity formula क्या है? The force of the friction between the two layer and fluid and having area in the squared and centimeter separated by distance will have viscosity is given by the F is equal to AD by dy, or F is equal to NA dV by dy. Here N is the coefficient of viscosity and dV by dy is equal to gradient, and for example dx is the 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square and dV is equal to 1 centimeter per second, and then F is equal to N tau. The coefficient of viscosity is defined as the force between the force of the friction that is required to the maintain a difference of a velocity of 1 centimeter per second between the parallel layer of the fluids. Unit and dimension formula of the coefficient viscosity. We know that the we तो जानते ही हम लोग n poise so on F is equal to n a dv by dy है, तो n is equal to f dy by a dv होगा, तो यूनिट जो होता है इसका n is equal to न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अनदर यूनिट जो होता है इसका पॉइस होता है, इसको ध्यान रखना। अब देखा जाए रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड फ्लोइंग पर सेकेंड through a pipe. It is denoted by Q, and Q is equal to AV meter cube by per second, where A is equal to area of cross sectional of the pipe and the viscosity of the liquid in the pipe. Poisson's law क्या होता है? एक फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू Poisson's law, the rate of flow Q of a liquid through a horizontal capillary tube of a radius r and the length I is given by the length L is given by the Q is equal to Q by 8 PR square per phi L, and where P is equal to pressure difference across the end of the tube. अब फाइनल फार्मूला हमारा है डेरिवेशन ऑफ पॉइसन्स फार्मूला एंड द लेट द फ्लो क्या मान लिए, रेट ऑफ फ्लो क्या मान लिए, क्यों मान लिए, डिपेंड ऑन एथ प्रेशर पावर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट P by L, and bth power of radius is equal to R, and the cth power of coefficient of viscosity, that is so guys, this video has been end. Thanks for watching video till the end, and don't forget you are a part of journey of NEET, so don't forget about like, share and subscribe. Bye bye and see you in next video.